bran flour. I think which is much simpler and what is much naturally available. So I think this is the dietary intervention. Regarding the other lifestyle, I think we have go to the exercise, maximum exercise one can do, and particularly the young people, and smoking and sedentary habits. I think they should be away. Last but not least is the detection and early action. What is detection? That you get your metabolic screen done, which will include the lipid profile, the liver function test, ultrasound of the liver, and if required, the fibro scan. And hemoglobin H1C. Let me add one thing. When we talk of fatty liver disease, it is not isolated disorder. It is a metabolic disorder. It is usually associated with the obesity, hyperlipidemia, high glycosylated hemoglobin level, insulin resistance, most of the time hypertension in young people. And certainly, if you develop diabetes, then the incidence and the ratio of fatty liver become 3 or 4 times. So I think these are the risk factors. And luckily, all these risk factors are modifiable. If I link this whole mission to the medical aid society, so I think we should create awareness. So my submission is this, that doing webinar, there are thousands of webinars going on this fatty liver today. You go to the any site and you will find the people coming with the same slide, with the same pathogenesis. So, ladies and gentlemen, I ask you one question: that how Medicaid society or RMU is better than others. So we are better than other because with this knowledge which we are spreading, no doubt is very much appreciated, but it is available everywhere. This is the age of digitalization. This is the age of communication. So I think what we actually do is we should, go for the awareness campaign, prevention, and this is only possible if we join hand and go to the community. Medical society already working in the community. So if you join with us, what we have done is the plan that what is called the diabetes free Rawalpindi. So there are how much time I have? Can I know how much time I have? Okay, fine. So I can speak. If people are still listening. So this diabetes free Rawalpindi is mean that there is a 2.4 million population, and we have planned two things in that. One is that we will go to the door to door. We have evolved and printed literature for that, and this we distribute to the every door. And then we take the data of how many people have fatty livers. We already collected some data. Fatty liver is about 40% in the population. We have taken about I think 2,000 patient and 7,000 interview. Thirdly, this is all associated with the ischemic heart disease, more incidence of stroke, as well as more diabetes, more hypertension. So you can imagine that every third person, at least, or second person above the age of 40 has one of those disorders. So this will be not issue of awareness of the doctors or healthcare professional regarding the nature of the disease or the pathogenesis of the disease or few new drugs which has just flooded the medicine, flood the market. So my very humble suggestion, please do not please write the drug. These drugs has to be taken a long time and they're very costly. So first thing do is the prevention and join hand with us. And if we have you are available, I can have a meeting on the Saturday, and I think Dr. Tayyib will be there. Our team will be there. So what we are doing in the Rawalpindi, going door to door, and we have gone almost to the almost 2,000. Yes, I think about 500 or 100 sort of 1,000 houses, and we have took this message to the 5,000 people in the Rawalpindi. So if Medicoid Society become our collaborator and spend more time on the community, so I think that will be the wonderful and that will be the game changer. Rather only doing seminars or doing things like that. And secondly, it will provide what is the community research. So I think the mission will be fulfilled only if we work together and take this message of prevention door to door and then see we can stop many people from developing fatty liver
and obviously the other risk factors. So my humble submission is join this mission of Rawalpindi diabetes free mission, and we have already established NCD clinic, the non communicable disease clinic. One is in the Union Council 15, I think Siraji Amalla. And we are established next week another clinic, and we plan 10 clinic on that. So I think I will request the admin and the team of Medicaid Society, and I think Dr. Tayyib will coordinate that how can we distribute your manpower along with our manpower to on these NCD clinic, and how can work on the different union councils. So I thank you once again for your time, and I congratulate the organizer for this arranging this seminar. And I'm again grateful for asking me to be part of this noble mission. Thank you very much. Uh, Sir, thank you so much for your time and valuable insights. If you have any questions, so I can quickly answer that. Sir, yes, we have questions, but we will ask those questions at the end of session. Thank you very much. Thank you, Doctor. Very Sir, kind thank of you. you. Thank you. Sir, thank you. And thank you for good picture of mine. Sir, you're welcome. Thank you. Okay, so now moving on, I would like to introduce Dr. Tayyib Saeed Akhtar, second speaker of today's webinar, a highly skilled gastroenterologist, hepatologist, with extensive experience in the internal medicine, digestive health, and advanced endoscopic procedures. Dr. Tayyib began his medical journey at Mayo Hospital, Lahore, and completed his FCPS in, in internal medicine at Holy Family Hospital, where he now serves as senior registrar at the Center for Liver and Digestive Diseases. Beyond clinical work, Dr. Tayyab is a passionate educator affiliated with the University of South Wales, United Kingdom, and the founder of Foreign Student Academy. Dr. Tayyab actively contributes to public awareness in making complex health topics accessible to all. We are now honored to have him with us. Please join me in welcoming Dr. Tayyab Saeed. Sir, am I audible to you? Yes, am I audible to you? Yes, sir. Up to you now. You can Is my continue. screen visible? Yes, sir. Okay, that's great. Um, and the slides are moving as well, right? Yes, sir. Thank you. So first of all, thank you very much, Medical Aid Society, and I must appreciate how organized you people are, and a very humbled to be part of this webinar today in the presence of my mentor, Professor Muhammad Umar. And I will just be briefing you, although many words of wisdom has been shared by Professor Umar. I will be just briefing you on the Global Fatty Liver Day, the essence of the day, and why it is important to celebrate this day. So the reason behind that we are celebrating, the globe is celebrating because fatty liver disease is now a global burden. So can you see this slide of mine? I want to be sure so that I can smoothly move forward. The one with the map on it. Is it visible? Sir, yes, screen is visible. Screen is visible? Yes, it shows today's Global Fatty Liver Day, Okay. So it and means that slide is not moving. Let me. sir, it just started moving now. Now it started moving. Okay. Yes, sir. Okay. Um, so Sir, no, if sir. You just started slideshow. yes, Sir, I have sir, started the slideshow. sir, उस slideshow से move नहीं कर रही screen. Okay, just let me see. अब बताइएगा अब हो रही है Sir, no, move नहीं कर रही.
अगर स्लाइड शो नहीं ऑन करेंगे तो वैसे मूव हो रही है, आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं। Sir, sorry, there is distortion in your voice. कैन यू गाइड मी? आपको मेरी आप स्लाइड्स नजर आई हैं? सर नहीं, आप स्क्रीन दोबारा से शेयर करेंगे, नीचे शेयर के ऑप्शन है। अभी बताएं। यस, यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। पहले इसको मैं फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ, आपको नजर तो आ ही रहा होगा, ठीक है? ये जी इस पे शायद सही नजर आ रहा है। ओके। यस अभी आपको मेरी ग्लोबल बर्डन वाली स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? यस मैप सर, वाली। यस चले, थैंक यू, thank you. Okay, so the reason is that the most prevalent chronic liver disease globally, which is affecting a quarter of the world right now, is fatty liver disease. And it is estimated that by 2040, 50% of the world population will be affected by fatty liver disease. So this is a huge calculation, a huge burden. Especially South Asian countries के अंदर it's very high, the prevalence is around about 26.9%. जैसे सर ने अभी metabolic syndrome की बात की, तो metabolic diseases वाले patients के अंदर this prevalence is about 54.1%, which is significantly very high. Although we have a very scarce data from Pakistan, but by large, few studies of fatty liver in the general population of Pakistan is actually increasing because आप आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, like few decades back, तो वेस्ट के अंदर alcoholic liver disease was the biggest threat, जबकि हमारे यहाँ it was the hepatitis B and C. Although it's still quite high, lekin, because it is B, the world is heading towards eliminating them by 2030. So in near future, the biggest threat will be the fatty liver disease, MASH or MESL. So this fatty liver disease is technically the new pandemic, and the reason behind कि हम लोगों का इस वक्त जो लाइफस्टाइल है, जो हम लोगों का फूड हैबिट है, जितना प्रोसेस फूड हम ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे they are eating and they are their lifestyle has changed, और हम ओबेसिटी बहुत छोटे बच्चों में देख रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चों में ओबेसिटी वालों में 40% में फैटी लिवर डिजीज देखने को मिल रहा है. सो दैट इज द रीजन we are heading towards this new pandemic. Professor Umar has rightly mentioned that there are a lot of metabolic comorbidities associated with fatty liver disease, including the diabetes, hypertension, dyslipidemia, and obesity. और आप अगर थोड़ा सा correlation के ऊपर इस graph को देखें, so the fatty liver disease comorbidities pooled prevalence is around about like 68% hypertension in the MASH patients, 47% diabetes in MASH patients, 72% dyslipidemia in MASH patients, and 82% obesity in MASH patients. मैश और फैटी लिवर डिजीज में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो. एक्चुअली दिस इज अ इवॉल्विंग नॉमेनक्लेचर. इनिशियली हम इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ही कहते थे, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. 2020 में अपाजल, विच इज अ एशिया पैसिफिक सोसाइटी फॉर द लिवर डिजीज, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि बिकॉज ऑफ द टाइट एसोसिएशन with the metabolic syndrome, it can be labeled as a MAFL. और इस बात को 2023 में AASLD, ईजल, अपाजल, इन सब ने एंडोज किया, और अब यही नॉमेनक्लेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रहा है विद मेसल्ड और मैश, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड लिवर डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टेटोटिक हेपेटाइटिस. सो नाउ ऑनवर्ड्स मैं यही वर्ड यूज करूंगा. अगर आप डिजीज के स्पेक्ट्रम पे देखें, whenever the fat deposition increases beyond 5%, the steatosis sets in. Although there are many factors
is involved. There are Sir, excuse me, sir. Sir, you muted your mic. two. Sir, sir, am I audible to you? Okay. Okay, अभी am I audible? Yes, sir, yes. Sir, you will have to share the screen once again. Yes, sure. Visible? Yes, sir, visible. Thank you so much, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। सो जैसे मैं एंड पे बात कर रहा था कि अगर हमने मैश को टाइमली इंटरवेन नहीं किया तो इट विल गोना लीड टू सिरोसिस और complications like hepatocellular carcinoma that they can also develop. Okay, very important thing is if a patient with fatty liver comes to us, can we predict whether this patient will gonna end up in fibrosis or cirrhosis, and what are the chances, how quickly this can happen? uh, yes, this prediction is possible, and now with new gadgets this possibility is now quite easy because पहले we used to have the facility of liver biopsy only, which is an invasive mechanism. uh, अब biopsy के बगैर there are a lot of non-invasive measures which can give us clues with quite good accuracy that this patient of fatty liver is ending up in a fibrosis, or it will gonna end up in fibrosis in a couple of years or not. uh, ये नॉन इन्वेसिव measures usually depend करते हैं lab parameters and some imaging techniques including ultrasound, a fibroscan, MRI. But इनकी base पे there are several scores that have been developed which can help us predict the outcome of the liver disease. So मैं एक दो की एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अगर सबसे सिंपलेस्ट जो टूल है, जो एक एक टूल जो कि हम रूटीन प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है टू डिटरमिन और टू predict कि whether the patient can develop fibrosis or not. It's known as FIB4 score. It is composed of only four simple parameters: age, AST and ALT from liver function test, and platelet count from the blood CP. अगर आप ये चार पैरामीटर उठाएं पेशेंट के और अपने अपने मोबाइल पे अभी भी FIB4 कैलकुलेटर निकालें जो कि फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, और आप उसमें चार वैल्यूज पुट करें, तो यू विल गेट अप अ स्कोर, FIB4 स्कोर, जिसको हम फिर इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि इफ द वैल्यू इज लेस देन 1.30, the probability is very low that this patient will gonna end up in a fibrosis or advanced liver disease. But if the score is more than 2.67, the probability is very high. Few cases which lie in the intermediate one are like 1.30 to 2.67. ये वो patients हैं जिनमें आपको क्लोज वॉच रखना पड़ता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है, या कोई और टूल अप्लाई करके मजीद आप इसको एनहांस कर सकते हैं। इससे एक अपग्रेडेड टूल जो करंटली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटर फॉर लिवर एंड डाइजेस्टिव डिजीजेस में, रादर इट वाज द फर्स्ट सेंटर इन द पब्लिक सेक्टर टू इंट्रोड्यूस द फाइब्रोस्कैन, और अभी भी जो लेटेस्ट फाइब्रोस्कैन का मशीन है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो न सिर्फ आपको LSM डिटरमिन करके देता है विच इज एक्चुअली द लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट फॉर द लिवर फाइब्रोसिस, और वो साथ ही साथ आपको कैप स्कोर डिटरमिन करके देता है, दैट इज एक्चुअली डिग्री ऑफ स्टेटोसिस। इन दोनों पैरामीटर्स के साथ अगर आप एक बायोकेमिकल प्रोफाइल मिलाएं विच इज द AST, so this is a newly developed score which is known as FAST score, and it is a very well validated score for fatty liver disease, NASH or MASH. If the value is less than 0.35 of this FAST score, it is very low risk for active fibrotic NASH. But if it is more than 0.67, the risk is very high. It means active intervention is required. So
क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं? Why we are screening all these patients? Why we want to calculate all these scores? Because if we will not do it, there can be a lot of liver damage leading to cirrhosis, carcinoma, and death. We can prevent early detection, can prevent progression and reduce the complications. And the other health conditions can also be high blood pressure can also be managed together. So these would make what is our goal? The first thing was diabetes, hypertension, directed treatment that involves the lifestyle model, and the main goal is to reduce the major. So when a बहुत wise बात की, he was very right in that the basic is very important, that weight loss and lifestyle modification is the key. बहुत अरसे से this is actually the main treatment, still it is the main treatment, and the data suggests that if a patient is able to lose more than 10% of the weight, the fibrosis regression can be up to 45% uh, in patients. इवन 3% भी अगर कोई अपना वेट लूज कर देता है, उसको भी कुछ ना कुछ स्टेटोसिस इंप्रूवमेंट मिलती है. बट यहाँ पे कैच क्या है? These patients can lose weight, but they cannot maintain losing this particular weight. Like data suggests that if a patient loses 10% of the weight, only 10% of those patients can maintain or sustain their weight loss at 1 year. So this is actually the biggest concern. So management is actually the weight loss, dietary habits को modify करना है, processed food, high carb food, high sugary food, ये सब चीजें avoid करेंगे, fresh fruits, vegetables को ज़्यादा use करेंगे. That is actually the main key for the treatment. But if your scores are high, uh, the patient is very high risk for developing fibrosis, we can have few treatment options. Previously कुछ ऑफ लेबल ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती थी जो ज्यादातर शुगर के पेशेंट्स को दी जाती थी, like pioglitazone, like GLP-1 receptor antagonist, like semaglutide, इसके अलावा SGLT2 inhibitors. तो अब the good thing is that more and more research has been put in. New drugs are in pipeline. One of the drug, resmetirom, is not only available, but FDA ने इसको fast track पे prove किया है because of some very good results. It is the results have shown, the study, the pilot study, which was initial study, उसने show किया है कि it significantly reverses the fibrosis as well. Good thing is it is available in Pakistan as well. Uh, but at the end, what my message is that the bottom line point is, जिस तरह हम हेपेटाइटिस बी और सी में लोगों को स्क्रीन करते हैं, बिकॉज इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होंगे फैटी लिवर के, we have to screen, especially the high risk population. We have to calculate the risk factors. We have to determine the risk through the calculators, and those who are high risk, उनको weight loss, dietary habits और very high risk वालों को drug treatment भी offer करना चाहिए ताकि fibrosis, cirrhosis and HCC को prevent किया जा सके. So thank you very much. That's all from my side. So if you have any questions, I will be happy. Professor Umar, definitely he can answer. He is the wisdom over here, so we can have him as well. Thank you. Thank you very much, Dr. Yep. Excellent talk as always. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you so much, both of our speakers. As we can see, Dr. Tayyib is still on duty and still with us, sharing his knowledge with us. Sir, thank you so much. Now, moving on to the next session. You all can ask your questions, and our speakers will answer your questions. So, all participants, you can ask your questions by typing all the questions.
Sir Umar and Sir Tayyib, am I audible to you? Yes, yes. जी जी, आप ऑडिबल हैं. Sir, we have कुछ question from participants. So I will ask, any one of you can guide us. So Yes, first please. question, how can someone know if one's victim of this silent disease? Sorry, say it again. Say it again. How can someone know if one is victim of this silent disease? Oh, right. So I think this is very important that remember this is asymptomatic. So it is not like having symptoms जैसे आपको कोई टाइफाइड हो रहा है या मलेरिया हो गया डेंगू हो गया. It is not a infective disease. It is not like having diabetes कि आपको पॉलीयूरिया होगा तो आपको पता चल जाएगा. It is not like hypertension कि आपने रूटीन में चेक कराया या आपको हेडेक हो रहा था नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से. सो आई थिंक एक प्रिंसिपल तो वही है कि स्क्रीनिंग. और जो डॉक्टर तैयब भी बात कर रहे थे और आज शायद जो लिवर डे है, सॉरी फैटी लिवर डे का, उसमें थीम भी यही है कि यू नो अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन. बट माय मैसेज इज स्टिल सेम कि आई थिंक फैटी लिवर का डायग्नोज ऐसे ही है कि जैसे आप एक अबीज को देख लें. तो एनीबॉडी हु इज अबीज, I think sure if you get their ultrasound done, you will get the 80% chance that is a fatty liver. If you find that anybody who has a sedentary lifestyles, anybody using this country is full of the people who always use carbohydrate. The reason is they are cheap and we are agro based country. तो नान जो आप देखेंगे कि वो तो हर बंदा ही खा रहा होता है और इतने खा रहा होता है कि शायद जितनी उसको ज़रूरत भी नहीं होती. तो मेरा ख्याल है कि फैटी लिवर तो हमें एक पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पे लेना चाहिए. पब्लिक हेल्थ इशू ऐसे ही है जैसे अब पाकिस्तान में अभी भी पोलियो एक पब्लिक हेल्थ इशू है, हेपेटाइटिस सी एक पब्लिक हेल्थ इशू है. तो फैटी लिवर डिजीज तो ये आई थिंक आई एग्री के एसिम्टोमेटिक होने की वजह से ये तो डिफिकल्ट होगा. बट एनी बॉडी हैज रिस्क फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, like diabetes, like ischemic heart disease, like dyslipidemia, like even hypertension, even sedentary lifestyle. So आप ये presume कीजिए कि by database और evidence के साथ उनको fatty liver होगा. But coming to the scientific answer, I think the only way is when you get your ultrasound done, you get your fibroscan done to grade it with the fat as well as the NASH classification or fibrosis. Or lastly, obviously, you can do the liver biopsy and you can do the lipid levels and liver function test. Thank you. Sir, thank you so much. Sir, we have another question for you. तो फिर तैयब साहब क्या करेंगे? Sir, उनके लिए भी क्वेश्चन है. We are उनके लिए trying to, sir जी. Sir, पूछ रहे हैं कि how non-RMU students can volunteer in the city clinics. I think that is a question which is very, very near to my heart. ठीक है, Tayyib is a young guy and he believe in treatment and he should, and there is the evidence. But I know what is the poverty index of this country. You know what is the latest data last night projected by the finance minister. 40% people are living below the poverty index. So fine, we all doctors have to do the practice and we have to write the drug. I agree, and the guidelines and their FDA recommendation. But look at the cost which has to be paid. And I'm really impressed what Dr. Tayyib was saying कि अगर आप आज सब हम अपना वेट रिड्यूस करें तो साल बाद जो है ना सिर्फ 10% लोग रह जाएंगे 100 में से जो जिनका वेट मेंटेन होगा, बाकी दोबारा गेन करना शुरू कर देंगे. तो मैंने पूरा इसको मिशन बनाया है कि इस साल और कोई काम नहीं करना और गवर्नमेंट को कोई रिकमेंड नहीं करना कि वो नए हॉस्पिटल बनाएं. कितने लोगों का हम ट्रीट किया करेंगे फैटी लिवर को, कितने लोगों का पेटोसेलर करेंगे, कितने और आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाएंगे, कितने लोगों का रीनल फेलियर करेंगे. तो गवर्नमेंट आई एम सजेस्टिंग कि यहाँ पे एक प्रिवेंशन का हॉस्पिटल बनाया जाए, जो गवर्नमेंट को मैंने प्रपोजल दिया. और आज हमारी सिंडिकेट की मीटिंग थी और आपको खुशी होगी कि एवरीबॉडी वाज रियली अप्रिशिएटिंग कि ये इनिशिएटिव तो हमने सोचा भी नहीं था. तो आप सैटरडे को आए, सैटरडे को हम इसकी मीटिंग करेंगे एंड वी विल गिव यू अ प्लान कि किस तरह हमने मेडिको एड सोसाइटी से के साथ मिलके काम करना है. और फिर ये आपका मिशन है. देखिए ट्रीटमेंट तो आपका मिशन ही नहीं है ना, तो इसमें तो आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. मेडिको एड सोसाइटी क्या करती है?
वो जो डिजर्विंग लोग हैं या मैन काइंड है उसको हेल्प करती है। दूसरा ये कि अब उसको मिशन बनाना चाहिए प्रिवेंशन का। ट्रीटमेंट के लिए मैं और तैयब साहब काफ़ी हैं, हम क्लिनिक पे बैठे हुए और दवाइयाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यू एज ए यंग जनरेशन, अपनी जो कौम है 25 करोड़, उसको बचाना कैसे है, आपको उस पे काम करना चाहिए। और जो कौम भी इस पे काम करेगी, वो ऑब्वियस बात है अपने अगले 20 सालों में उन्हें ये सारे इंसिडेंट्स जो है रिस्क फैक्टर्स के और डायबिटीज़ के और मैश और नैश के सब कम हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करें हम इस मिशन को कि हम इसी को लीड करें और इसी पे सारा वक्त लगाएं, और इंशाल्लाह ताला हमारा वे फॉरवर्ड ईयर है। अदरवाइज जो लोग 40% पॉवर्टी इंडेक्स से नीचे रह रहे हैं उनको ट्रीट कैसे करेंगे। सो दिस इज माई रिकमेंडेशन कि आप सैटरडे को आ जाएं और फिर हम इसका एक लाएमल बना लेंगे कि उसमें RMU नॉन RMU ने कैसे इन्वॉल्व होना है। थैंक यू। Sir, okay, that's best. Thank you so much. So I will ask next question from Dr. Tayyib. गुड। तो आई एम फ्री नाउ। Okay. Yes, sir, you are free. Thank you so much for your time. Okay, Dr. Tayyib, am I audible to you? Sir Tayyib, am I audible to you? Yes, please. Sir, I have a question for you from participants. Sir Tayyib. अगर डॉक्टर तैयब नहीं है तो आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन अगर जरूरी है तो। Okay, sir, if you have time, तो आप बता दें. How can non-alcoholic fatty liver disease can be reversed and up to Okay, which okay. date? I think so. It was disconnected and now reconnected. Kindly repeat गुड। the question. Okay, sir, how can non-alcoholic fatty disease can be reversed and up to which grade it can be reversed? Sorry, how can? Non-alcoholic fatty liver disease can be reversed and हम उसको Okay, किस grade reverse. तक reverse कर सकते हैं? Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, so basically मैंने अपनी टॉक में भी थोड़ी सी बात की कि ट्रीटमेंट के पिलर्स तो वही हैं, जैसे सर ने भी बात की कि द मेन थिंग इज एक्सरसाइज, फूड, डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, की पिलर्स यही हैं। अ, फिर एविडेंस सजेस्ट करता है कि अगर हाई रिस्क या हाई डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस आ रहा है तो आप टारगेटेड थेरेपीज मौजूद हैं, उनको यूज करके आप फाइब्रोसिस की डिग्रीज को वापस कर सकते हैं। लाइक इफ पेशेंट इज हैविंग F3 और F4 फाइब्रोसिस with lifestyle modification and in advanced cases with drugs, the fibrosis score can reverse like 1 to 2 डिग्री नीचे भी आ जाता है, इजीली आ जाता है। लेकिन अगेन द थिंग इज कि आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हैं तो आपने उसको मेंटेन करके रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर उमर कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही को की होना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे लगते नहीं, उसमें पैसे बचते हैं उल्टा, जबकि ड्रग्स जो है डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव। Okay, sir. Thank you so much. I have a next question. प्लीज गो Sir, अहेड। yes. Does fatty liver disease have any relation with stressful life? With Stressful life. stressful life, yes, stress is also one of the factors। जिस तरह हम लाइफस्टाइल की बात करें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें, उसमें ऑल्सो जो डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो हमने चार बड़े बताए, लाइक द the obesity, the dyslipidemia, hypertension, and the fourth one जो हमने जिसका जिक्र किया। लेकिन स्ट्रेस इनडायरेक्टली बहुत से तरीकों से इन सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अफेक्ट कर सकता है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, लाइक द स्ट्रेसफुल कंडीशंस लीड टू
the continuous release of some bad hormones, and those bad hormones are actually more prone to cause the not only the fatty liver disease but also the other parameters of the metabolic syndrome. So stress is also one of the factor, a key factor, and it should be managed. Right, sir. So next question is, should we think about screening of fatty liver disease in young adults, like people below 20? Okay, it's a good question. एक्चुअली जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बात की कि इट इज़ एन इवॉल्विंग थिंग, पीपल आर लाइक गोइंग आफ्टर इट, पीपल आर रियलाइजिंग कि ये बड़ा थ्रेट है फ्यूचर का. तो अभी बहुत सी गाइडलाइंस उस तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन आई कंपेयर इट विद हेपेटाइटिस सी एक्चुअली. जिस तरह हेपेटाइटिस सी की गाइडलाइंस इवॉल्व होती गई और फिर उसमें स्क्रीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी अनकरीब गाइडलाइंस आ जाएंगी जिसमें स्क्रीनिंग को पार्ट बना दिया जाएगा. अब एज का कट ऑफ डेफिनेटली आप अगर डेटा भी देखें ना, तो द वर्स्ट पार्ट इज कि बिकॉज ऑफ द करंट लाइफस्टाइल सिनेरियो, बहुत छोटे बच्चे पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर भी वी आर हैविंग फैटी लिवर डिजीज, वी आर हैविंग ओबेसिटी. और स्टैट्स कहते हैं कि द द चिल्ड्रन विद ओबेसिटी have 40% फैटी लिवर डिजीज. लेकिन यहाँ एक और पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इवन फ्यू ऑफ द थिन लीन पीपल, क्योंकि ओबेसिटी तो एक रिस्क फैक्टर है, देयर आर लॉट अदर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, या इवन स्ट्रेस जैसे कि हमने इसकी बात की. सो थिन लीन पीपल के अंदर भी 10 to 15% में फैटी लिवर डिजीज मौजूद है. So that means we in near future we may be requiring a very gross type of screening. तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमारे पास नॉन इन्वेसिव मेजर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, नॉट ओनली टू स्क्रीन बट ऑल्सो टू कैलकुलेट द रिस्क. सो मेरा ख्याल है ये अब फ्यूचर में आसान हो जाएगा. Right, sir. So can I ask next question? Yes, sure, go ahead. Sir, what are changes, like what are lifestyle changes, uh, through which we can prevent fatty liver disease? देखिए, वही चीज रिपीटिशन है एक्चुअली. दो बड़ी बातें याद रखें, एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी है और दूसरा आपका न्यूट्रिशन है. तीसरा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को बीच में डाल सकते हैं. तो अ गुड एक्सरसाइज आप अपनी एज और अपने कोमोबिडिटीज के हिसाब से उसको टेलर कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ एक्टिव एक्टिव लाइफ. जो जित आप लोग यंग हैं, आप लोगों को तो जॉगिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज, एरोबिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए. जो थोड़े से ज़्यादा एज के हैं वो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर वॉक और हाइक, वट एवर सूट्स देम. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि we should have a active life rather than a sedentary lifestyle. And in the nutrition, processed food, the junk food, high carb food, foods with high glycemic index, खास तौर पे जो बेकरी आइटम्स, द कोल्ड ड्रिंक्स, ये इन सब को सख्ती से अवॉइड करना चाहिए. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खास तौर पे वेजिटेबल्स, दे आर द की. ये वेट रिडक्शन के अंदर भी, और अगर आप वेजिटेबल्स को पहले इस्तेमाल कर लेंगे, अपना मील ही वेजिटेबल से स्टार्ट करेंगे, तो बिलीव यू मी आपकी ओवरऑल डाइट के अंदर कार्ब का कंपोनेंट खुद ही से बहुत कम हो जाएगा. सो दीज आर द लाइफस्टाइल हैक्स जो कि आप यूज कर सकते हैं. Okay, sir. So we have next question. Differentiate between NAFLD and MAFLD. ये सिर्फ नॉमन क्लेचर का फर्क है एक्चुअली. जैसे मैंने जिक्र किया ना कि ये इवॉल्विंग नॉमन क्लेचर है, तो कुछ अर्सा पहले तक हम इसे नेफल्ड या नैश कहते थे, और अब हम इसी डिजीज को मेफल्ड या मैश कहते हैं, क्योंकि अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि दिस डिजीज इज वेरी टाइटली कोरिलेटेड विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो सेम चीज है, सिर्फ नॉमन क्लेचर इवॉल्व हुआ है, और कोई मसला नहीं. Sir, okay, how can we battle against NAFLD, as you said?
among young So adolescents in Pakistan. how can we Battle again NAFLD. बेटर लगे? तो वो Yes. देखिए वही बात होगी, सर ने भी बहुत डिटेल में ये बात की कि इसमें आपको सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, लाइक वेबिनार, दिस वेबिनार इज वन ऑफ द एफर्ट्स। इसके अलावा अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इस अवेयरनेस को बहुत आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को अवेयर करेंगे, जैसे मुझे याद है कि जब काला यरकान या हेपेटाइटिस सी शुरू शुरू में लोग इसको इतनी लिफ्ट नहीं लगाते थे, लेकिन विद अवेयरनेस, विद सेलिब्रेटिंग मोर एंड मोर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, अब हर बंदे को पता है, देयर इज क्वाइट अ गुड अवेयरनेस। सो पहली चीज तो यही है, एजुकेशन, अवेयरनेस अमंग्स द कम्युनिटी। एंड देन जो सर का मॉडल है, सर ने जो बहुत अच्छी बात की कि हम सब मिल के एफर्ट करें और कम्युनिटी के लेवल पे इसको इसको स्क्रीन करने के लिए भी एंड देन मैनेज करने के लिए भी एफर्ट्स करें, प्रोग्राम्स बनाएं, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको एरेडिकेट किया जा सकेगा। Right. So, what is complete diagnostic procedure for this disease, like देखिए fatty liver? आइडियल जो है ना, आइडियल वो तो लिवर बायोप्सी होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द गैजेट्स अवेलेबल नाउ अब हमें रेयरली बायोप्सी के लिए जाना पड़ता है। सो अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके अंदर फैटी लिवर आ जाता है तो जो कि आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप इस पेशेंट को थॉरोली एवेल्युएट करें, उसके मेटाबॉलिक प्रोफाइल को भी और उसके लिवर स्टेटस को भी, और फाइब्रोसिस और स्टेटोसिस को ग्रेड करने के लिए वी डू हैव फाइब्रो स्कैन। आप लोग लकी हैं, आपका जो 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 आप यूनिवर्सिटी है उसका जो हॉस्पिटल होली फैमिली, उसका लिवर सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन पाकिस्तान, हैज दिस फैसिलिटी। और उसके बाद आप उन पेशेंट को थॉरली इवैल्यूएट कराएं और फिर उनके सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको इंडिविजुअली एड्रेस करें। Okay, sir, what causes fatty liver in vegetarians and people with healthy lifestyle occasionally? व्हाट कॉजेज, सॉरी, व्हाट कॉजेज Fatty liver in vegetarians. इन वेजिटेरियंस? यही क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज फैटी लिवर इन वेजिटेरियंस? अगर यही क्वेश्चन है, मैंने इसको सही अंडरस्टैंड किया है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वेजिटेरियंस। जैसे हमने कहा कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, ओबीस हों, थिन हों, तो एक्चुअली देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी देयर आर सेवरल थ्योरीज, द टू हिट थ्योरी, और उसके अंदर कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। सो एक्चुअली एक फैक्टर नहीं है ये। तो हम जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं तो यूजुअली एक पूरा पैकेज मिलता है पेशेंट के अंदर, पर एक्चुअली दिस इज नॉट द ओनली थिंग वी हैव। बहुत से और फैक्टर्स, माइनर फैक्टर्स सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि डेटा सजेस्ट कर रहा है कि बच्चे हों, पतले लोग हों, ओबीस लोग हों, सबके अंदर फैटी लिवर किसी ना किसी परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। सो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वेजिटेरियंस के अंदर ही होगा, तो वेजिटेरियंस के अंदर बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं, राइट? Okay, sir. So our next question is that in your clinical experience, what is the biggest unmet need that patients with fatty liver disease suffer from throughout their diagnosis and treatment procedure? आई थिंक सो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, अभी तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। पीपल आर नॉट वेरी वेल फेमिलियर विद दिस फैटी लिवर डिजीज। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना और एजुकेट करना। दूसरा, फिर क्योंकि अब एक ड्रग आ गई है, सर के भी कंसर्न्स बड़े अच्छे थे और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ इस बात को, कि जब ड्रग अवेलेबल हो जाती है तो उसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उस मिसयूज को भी रोकना, ये भी मेरा एक क्लिनिकल कंसर्न होगा कि ड्रग मिले तो उसी को मिले जिसको रियली डिजर्व कर रहा है। हर किसी को फैटी लिवर कह के और ड्रग स्टार्ट करना, दिस इज नॉट गुड। सो एक तो प्रॉपर एजुकेशन कम्युनिटी लेवल पे, दूसरा स्क्रीनिंग, तीसरा रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, चौथा आप उसको उसकी सेवेरिटी इंडेक्स को हाईलाइट करें, और फिर डॉक्टर्स को भी एजुकेट करें कि किस पेशेंट में ड्रग देनी है और किस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल बी गुड एनफ।
Sir, thank you. One of our participants is asking that their grandfather is diagnosed with this disease and they were recommended Fibertex sachet. So they're asking about that. Is this actually a good recommendation? इस तरह की जो मेडिकेशन है ना, लाइक इस ये फाइब्रोटेक, आई नो दिस, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ड्रग्स जिसमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, दे आर ऑल ऑफ लेबल। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इनके इनके हक में एक्चुअली। सच्ची पूछें तो जब तक ये ड्रग जो अब हमारे पास पहली ड्रग आ गई है, और लाइकली ये है कि पाइपलाइन में बहुत सी अगले 2-4 सालों में बहुत सी ड्रग्स आ जाएंगी, uh, उस वक्त तक जब तक ये ड्रग्स नहीं थी, तो क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा मेडिकली ऑफर करने को नहीं होता था, तो पीपल यूज टू यूज डिफरेंट, जिसको कहते हैं जुगाड़ लगाना। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनका प्लस माइनस थोड़ा बहुत शायद फर्क हो सकता हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक एक रिसर्च बेस हमें एविडेंस ना मिले। Okay, sir, we have some other questions. How to treat fibrosis developed due to MASH? हाउ टू ट्रीट फाइब्रोसिस? Developed due to MASH, I think. वो ये तो बात हो चुकी है, थिंक सर रेपिटेशन, ये It's, तो बात हो गई, हमने जो I think yes, सारी it's बातें कर ली है उसी के okay. अंदर बात आ रही है फिर से। And there are some other questions. How can we differentiate non-alcoholic fatty liver disease from NASH without liver biopsies? And why is making this distinction important? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। विदाउट लिवर बायोप्सी देखें, 100% डिफरेंशिएट करना वॉन्ट बी इजी। इसीलिए जो नॉन इन्वेसिव मैयर्स हैं वो आपको एक क्लू देते हैं, और उन क्लू की अपनी एक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है। जो स्कोर्स जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी अपनी एक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है। सो आइडियली तो लिवर बायोप्सी पे ही पता लगता है, इसके अलावा कोई दुनिया का तरीका नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से डिफरेंशिएट कर सके। बट विद दीज टूल्स एंड दीज स्कोरिंग सिस्टम्स आपको एक क्लू मिल जाता है। और तो जब आप देखते हैं ना कि इन्वेसिव वर्सेस नॉन इन्वेसिव और एक स्ट्रॉन्ग टूल वर्सेस रिलेटिवली लेस एक्यूरेट टूल, तो फिर आपको एक दरमियान की चीज निकालनी पड़ती है। सो आई थिंक सो स्टिल नॉन इन्वेसिव मैयर्स के ऊपर हम काफी हद तक डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन जहां पे डाउट हो क्लिनिकली और 100% एक्यूरेसी चाहिए हो, तो वहां पे लिवर बायोप्सी पे जाना पड़ेगा। Okay, sir. I think that's a wrap to our question and answer session. ओके, दैट्स ग्रेट। Okay, sir, VC sir, Dr. Amar sir, आपके लिए question है कि what are the major stages of NAFLD and are these most commonly seen among people? Dr. Amar, are you with us? सॉरी, आप बताइए, मैंने वो सुन नहीं रहा था, दोबारा बताइए। Yes, Dr. Amar, आपकी ये question है, what would be the stages of non-alcoholic fatty liver disease and which stages are most commonly seen among patients usually? Thank you. I think the question, if you asking me the real answer, it is a database question, and I can't see that what is this different stages in the Pakistani population because we don't have any data or any study available. I remember I did the first study when I was assistant professor, liver biopsy on 21 patient. I think this was published in Journal of RMC. And what Tayyib was saying that in they were all non-diabetic, all lean patient, and they have fatty liver at that point of time also. So I'm not aware of any data regarding the Pakistan, but certainly what is the different stages? I think it depends upon what sort of either history is available and what sort of investigation we have. And already, I think, elaborated by Dr. Tayyib, you do the fatty liver, you do the fibroscan, you can do the FIBO, you can do the five classification. And once you got all these investigation, you have a score in your hand. And looking at the score, you can always classify that this is a NASH, MASH, or fibrosis, or simple fatty liver. So it is battery of test which is required. Okay, Thank sir, you. thank you so much. And we have another question for you that can a person with normal liver enzymes still have advanced fatty liver disease? Oh, this is very intriguing question that if you have normal liver function and you can have I think usually you should have inflammation first.
So natural history shows that if you have a fatty liver disease, so you have asymptomatic, then you obviously have macrovascular disease, you have micro sort of disease, micro lobules होते हैं liver के अंदर, and then it lead to an inflammatory reaction. It lead to a antioxidant, sorry, oxidation, what is called the oxidative stress on the liver. So I'm not sure. Possibly Tayyib can answer this question that you can bypass, inflammation, or you can bypass the ALT, and you can directly go to the fibrosis. This is one aspect. The second aspect I understood from your question is that you can go to the fibrosis and the ALT, how sensitive it is to detect के liver disease कितनी है. So I think this is possible that you can have in few patient or minor patient ALT may be normal, but you can progress to liver cirrhosis. But I'm not sure of the exact data. Thank you. Okay, sir, this is the last question we have. What are the current prospects of liver transplant in Pakistan if somebody suffering from this disease wants to opt for it? This is for me or this is for Tayyib? Sir, आप में से जो आंसर करना चाहे. So, okay. So I think liver transplant is now available, I think, in more than a half a dozen centers. And we have a very good prognosis. I know that the biggest data is coming from Shifa International. They done, I think, the almost 3,000 or 4,000 liver transplant. The Gambit is another competitive, which is in the same. I think they also competed more than 2,000. Same is in the Karachi, which is I think Dow University Center is doing it. This I think the private couple of centers are doing. I see that the liver transplant is available in multiple centers. Issue is the cost, but I think the cost is coming down, and the because of the good expertise, because of the good immunosuppression, because of the good follow-up, I can see a bright future of liver transplant in Pakistan. Thank you. Thank you so much, sir, for your time. I'd like to thank both you and Dr. Tayyib for participating in this session and giving us such valuable words of wisdom. I think we are finished with our questions and we can end the session now. I'll just write, thank you again for participating and giving us such your valuable time. So thank you for your invitation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'd also like to thank all our participants for being with us, for participating in this. Especially this And is thank you, Dr. Tayyib, also. yeah, especially. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, everyone, for participating in this webinar, especially since this is such a community driven disease. We hope you all learned something from this. And post evaluation forms will be shared soon with you all. And on that basis, you will be rewarded e certificates as well. Thank you so much for participating, and Allah Hafiz.